of the organizing committee, I cordially welcome all the students, accompanying teachers, Director IACS, Registrar, and the distinguished lecturers at Indian Association for the Cultivation of Science, the oldest research institute in India as well as in Asia, established on 29th July 1876. We are about to start today's outreach program as a curtain raiser of 9th India International Science Festival IISF 2022 to be held during 17th to 20th January 2024 in Faridabad, Haryana. As we all know, IISF is one of the largest events which showcase the achievements of Indian science before students, young researchers and the general public at large. IASF, with its theme Marching Towards Amrit Kal with Science, Technology and Innovation, is planned with as many as 14 events. Mega Science and Technology exhibition is one of them. We have already started the program. Dr. Ranjan Sen and Dr. Viva Tandon, Director, and Dr. Chandrima Shah has garlanded the bust of Dr. Mohanlal Sharkar, the great philanthropist, visionary and the founder of Indian Association for the Cultivation of Science, and has also lit the auspicious lamp in front of the bust of Dr. Sharkar. May I now request Dr. Ranjan Sen, Director IACS, to please come on the dais and take a seat. Sir, please. May I also request Dr. Viva Tandon, Director, CSR, IFCB, and Dr. Chandrima Shah, JC Bosler, Distinguished Professor, CSR, IISF, to come on the dais. Registrar may also request Ms. Sharbani Shah, Registrar ICS, to come on the dais. May I request Anushmita to present the bouquet to Professor Dr. Ranjan Sen, Director IACS, and the memento. Thank you, Anushmita. May I request Shomili to present the bouquet and memento to Dr. Viva Tandon, Director, CSR, ISCB. Thank you. May I request Anushmita to present the bouquet and memento to Dr. Jishnu Basu. Dr. Chandrima Sinha. Dr. Chandrima Shah. Thank you. May I request Shomili to present the bouquet and the memento to Ms. Sharbani Shah, Registrar, IACS. Thank you. As of now, 3, 4, 5, 6, 7 schools have participated, and there are a list of 10 schools
They have not come, 5 schools have not come yet. May I request Dr. Ranjan Sen to give the welcome address. Good morning, everyone, and good morning to Dr. Diva Tandon and Dr. Chandrima Saha. Welcome, all of you. So, you have come to the oldest research institution of Asia. Not only India, it is Asia's first research institution. It was established in 1876. So, probably the first time most of you are coming to this organization. Welcome and enjoy the day. Try to learn. We have 2 great speakers and also some more talks in the afternoon and some other programs. We have 2 great scientists, Dr. Chandrima Saha and Dr. Diva Tandon. So you will learn from them a lot. I will not give a long lecture. So only thing what I will say that today you please go around IACS, enjoy and try to understand the science, try to enjoy, try to have fun. There will be demonstrations of different scientific experiments and some equipments. You can feel how the researchers work. I'm sure some of you in future will take this profession, and we expect some of you to be our PhD students or even BSM students in coming years. And so I will not take much time. So only thing is that we have this curtain raiser event. It is a prelude to a big festival which is organized every year by Government of India. So this time it is in Faridabad, Delhi. In Calcutta it was in 2019. I think many of your seniors probably have attended that time. So it is a prelude to all the research institutions and in a way, in all the research institutions in Calcutta area that we are organizing, that every week there are some, every institutes are doing this. The idea that you get a first-hand experience of how very cutting-edge research in modern day is working happens in IACS, both in physics, chemistry, mathematics, biology and computer science, so that you can decide your future career based on that. I'm sure some of you will be so impressed and will take this career, and I always encourage that take science as a career. It's a very nice career, and not only that, the scientific knowledge, what science teach you to improve your analytical aptitude, you can apply everything in your personal life, social life. So try to be a scientist in mind at least, may not be in profession, which hopefully today's visit and today's lectures and IACS atmosphere will help you to take that path. Thank you very much for once again coming. Please enjoy the day. And end of the day, I'm sure you will have a different view of what we do. And I would like some of you to come back here as a student. Thank you very much. Thank you so much, sir. May I now request Dr. Chandrima Saha, Dr. Ranjan Sen and Ms. Sharvani Saha to take their seat. And now it is time for first invited lecture. Dr. Diva Tandon, Director, ICS IISF will deliver lecture. Dr. Tandon has more than 74 publications and तो हेलो बच्चों, मुझे बंगाली नहीं आती, ठीक है? आपको हिंदी और इंग्लिश समझ में आती है? गुड, वेरी गुड। और आप लोग पीछे क्यों बैठे हैं? ये सीट किसके लिए है? आज आप चीफ गेस्ट हैं, आइए आगे आइए, प्लीज कम, जल्दी आइए। देखिए कितने लोग आते हैं। जो पीछे बैठे हैं जल्दी आगे आइए, यहाँ इन सीट पे आइए। लड़कियां ज्यादा आगे आनी चाहिए, प्लीज कम फास्टर। बैठिए बैठिए बैठिए, फटाफट बैठिए। आज आपका दिन है।
मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दे देती हूँ। मैं बगल में यही पास में जादवपुर में इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। ठीक है, जैसे आपकी स्कूल की प्रिंसिपल होती है वैसे मैं वहां पे डायरेक्टर हूँ। और इसके पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में और जेएनयू में मैं पढ़ाती थी। और अभी भी जब मेरा यहाँ से टेन्योर खत्म हो जाएगा तो मैं वापस दिल्ली चली जाऊंगी। तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 महीने पहले आई हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा कैलकाटा के बारे में पता नहीं है। ठीक है, सो नाउ एज यू नो दैट व्हाई यू हैव बीन कॉल्ड हियर, आपको इसलिए बुलाया गया है कि फरीदाबाद में या एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है और उसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ठीक है, तो उसके थ्रू हम कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को साइंस के बारे में बताया जाए और उनके अंदर एंथुजियाज्म जगाया जाए कि साइंस पढ़ने के क्या फायदे हैं, आप कैसे ह्यूमैनिटीज को, कैसे आप ह्यूमन को आप कैसे हेल्प कर सकते हैं, हमको अपनी हेल्प कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं, अपने देश की हेल्प कर सकते हैं या पूरे वर्ल्ड की हेल्प कर सकते हैं। तो जब हम लोग पढ़ा करते थे तो एक क्वेश्चन पूछा जाता था या एक डिबेट होता था, विज्ञान वरदान या अभिशाप। कभी सुना है ऐसा? नहीं। वेदर इट इज ए बून और इट इज एडवांटेज, फाइन। बट आज हमको सबको पता है कि विज्ञान सिर्फ एक वरदान है और वरदान ही है और इसकी हमारी सोसाइटी को बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं अगले कुछ मिनटों में 25 से 30 मिनट में आप लोगों को कुछ बताने की कोशिश करूंगी, कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करूंगी। और वो बताने का मेरा कारण ये है, आई एम गोइंग टू डू दिस जस्ट बिकॉज दैट आई वांट टू टेल यू दैट साइंस कैन बी डन बाय एनीबडी हु वांट्स टू डू द साइंस, हु परस्यू साइंस, who have pursuance, who have patience, who reads a lot, who works hard. तो साइंस कोई ऐसी चीज नहीं है which is only pursued by कोई स्पेशल आदमी नहीं चाहिए। उसके लिए आपके अंदर सिर्फ एक हार्ड वर्क, पढ़ना, लिखना, उसको परस्यू करना, एक्सपेरिमेंटेशन करना, उसको सीखना, जैसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में काम करते हैं वैसे ही उसको भी करना है। लेकिन सिर्फ इतना फर्क है कि उसको आपको बहुत ऑर्गेनाइज मैनर में करना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे इंडिया के, भारत के कुछ ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताऊंगी, जिसमें 1-2 लोग कैलकाटा से भी हैं जिन्होंने कैसे अपना जीवन बिताया, कैसे साइंस को एस्टैब्लिश किया, हाउ डिड दे रियली एस्टैब्लिश, what were their contribution and how their contribution has become so helpful to the society that all of us are enjoying there are lots of benefits are being enjoyed by all of us because of those contribution, जिसको आप innovation, invention, बहुत सारे शब्दों में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो these are the words, these are the things which I am going to tell। और आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, so I have written here the uncelebrated heroes of Indian science. Fine. Why did I say uncelebrated? You would say कि आपने बहुत सारे आप टीवी में प्रोग्राम देखते हैं और वहां पे आप एक क्या कहते हैं, टीवी में एक जो सीरियल दिखाई देता है वो भी आदमी जो उसका हीरो होता है दैट बिकम्स अ सेलिब्रिटी। लेकिन आपको कभी भी रेगुलरली इन लोगों के बारे में नहीं बताया जाता। ठीक है, ये सेलिब्रिटीज हैं, साइंस के सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पाते जब तक आप रियली कॉलेजेस में नहीं आते, या इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में शायद आपने कभी सुना ही नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, but they have done a wonderful contribution to the science. So now I'm going to my second slide. And before going to those 5 heroes which are mentioned here, I will tell their name later on. Dr. Ramachandran G. and Ramachandran, Dr. Hargobind Singh Khurana, Dr. Shambhunath Dey, Dr. Shubha Guha Mukherjee, and Dr. Obaid Siddiqui.
So ये 5 डिफरेंट साइंस की स्ट्रीम से हैं. They have been talking for the different things. So if you now I'll talk one by one about them. But first of all, I would like to talk about some of the nationalist scientists. What is this new term? Scientist is a scientist. Why am I putting here nationalist scientist? ये कुछ ऐसे लोग हैं, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार. अभी आपने बाहर देखा होगा कि अगर आपने नहीं देखा तो आप बाद में देखेंगे कि ये जहां हम खड़े हुए हैं, इस इंस्टीट्यूशन को, इस जगह को बनाने वाले डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार थे. और इन्होंने कुछ ऐसा किया और इन्होंने सोचा कि हमको एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, और इसलिए इन्होंने जो है वो कैलकुलेशन ऑफ साइंस को जो है बनाया. और आज जहाँ पे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे आप जैसे लोग साइंस सीखते हैं, हम जैसे लोग साइंस परस्यू करते हैं, और उसका फायदा पूरी ह्यूमैनिटी उठाती है. तो दूसरी तरीके से आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, ये भी बंगाल से ही हैं, और इन्होंने बहुत कुछ किया. और आपने बंगाल केमिकल सुना होगा, बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारी इन्होंने इनिशिएटिव्स लिए, और इन्होंने जो है वो साइंस को एस्टैब्लिश किया. सर जगदीश चंद्र बोस, जिनके नाम पे बोस इंस्टीट्यूट है, अगेन ही इज फ्रॉम कैलकाटा. प्रोफेसर मेघनाथ साहा, ही इज अगेन फ्रॉम कैलकाटा. एंड देन सर सीवी रमन, जो कि IACS में ही थे और वो इज ए नोबेल लॉरेट, और जिनके नाम पे आप रमन इफेक्ट पढ़ते हैं. अब इनको मैंने क्यों कहा कि ये नेशनलिस्ट साइंटिस्ट हैं? बहुत शुरू में जब हमारे ऊपर ब्रिटिश का राज था, उस जमाने में हमारे ऊपर जो है वो ब्रिटिश क्या करते थे, एक उन्होंने एक चक्रव्यूह रचा. उस चक्रव्यूह का हिस्सा ये था कि किसी तरीके से खाली हम इनके ऊपर राज न करें, इनके दिमाग पे भी राज करें. इनकी जो साइंटिफिक कैलिबर है, जो इनके अंदर टैलेंट है, जो इनका कैलिबर है, नॉट ओनली साइंटिफिक, एनी काइंड ऑफ अ कैलिबर, उसको हम आगे ना आने दें. ये वो कुछ लोग हैं जिन्होंने ये सोचा कि नहीं, हमें आज 1920s में, और या उसके भी पहले 1885, उसके भी पहले इन्होंने जो है वो ऐसी कुछ साइंटिफिक डिस्कवरी इंडिया में इस्टेब्लिश करने की कोशिश की. ये लोग कुछ, इन्होंने यहाँ से मास्टर्स किया, बैचलर किया, बाहर गए, बाहर से वापस अपने देश में आए, या बाहर बैठ के भी इन्होंने यहाँ के देशवासियों को या साइंटिस्ट को या अपनी साइंस को यहाँ इस्टेब्लिश किया और अपने बलबूते पे इस्टेब्लिश किया. उन्होंने ये कोशिश की कि अगर हम यहाँ पे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करेंगे तो हम इनसे साइंटिफिकली भी लड़ सकते हैं. हम सिर्फ स्वाधीनता संग्रामी उनको मानते हैं जिन्होंने संग्राम किया स्वाधीनता लाने के लिए. ऐसा नहीं है, ये भी वो स्वाधीनता संग्रामी हैं जिन्होंने साइंस को फर्स्ट रखे और अपने इंटरेस्ट को पीछे रखे. जैसे इसमें डॉक्टर बोस हैं. डॉक्टर बोस ने कहा कि जब वो यहाँ आए तो उनको 1/3 ऑफ द सैलरी मिलती थी. उन्होंने कहा मैं नहीं लूंगा, मैं उतनी ही सैलरी लूंगा जितनी ब्रिटिश साइंटिस्ट को मिलती है. तो इन्होंने अपने अपने तरीके से यहाँ पे साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट किए, यहाँ पे बहुत अच्छी खोज की और अपने आप को एस्टैब्लिश किया और दुनिया को ये दिखाया कि जो भारत है वो सिर्फ स्नेक चार्मर्स का देश नहीं है. ये बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही बहादुर और बहुत ही ब्रेव साइंटिस्ट का देश है, और आप नेशनलिज्म थ्रू साइंस भी दिखा सकते हैं. इसलिए मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई है. और ये रिसेंटली विज्ञान भारती, विज्ञाना भारती जिसको कहते हैं, उन्होंने एक मैगजीन निकाली है और उसमें उन्होंने इन साइंटिस्ट के बारे में बहुत कुछ लिखा है. एंड आप लोगों को सबको, मैं यहाँ पे जितनी भी स्कूल टीचर्स हैं, टीचर्स इंचार्जेस हैं, मैं उनको कहूंगी कि आपको ये इन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देनी चाहिए और अपनी लाइब्रेरी में रखनी चाहिए. ये बच्चों को बहुत ज्यादा जो है इससे इंस्पिरेशन मिलेगा और साइंस कैसे करना इतना मुश्किल नहीं होता, ये भी इनकी समझ में आएगा. और कोई भी आदमी जिसके पास दृढ़ शक्ति है वो साइंस कर सकता है. सो नाउ आप ये देखिए कि कुछ नए इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ बनाए गए. आप IACS में बैठे हैं, IACS की पुरानी बिल्डिंग है, आप नई बिल्डिंग में बैठे हुए हैं. इसी तरीके से आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने बंगाल केमिकल बनाया. डॉक्टर JN बोस ने एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन बनाया. इन लोगों ने जानबूझ के
they have made such effort to make this start the new scientific education at this particular place. So it is very necessary that you create the scientific education in the country. क्योंकि उस समय साइंटिफिक एजुकेशन वो हमारे बच्चों को, हम लोगों को साइंटिफिक एजुकेशन में पीछे रखते थे. सो दैट इज व्हाई दे हैव डन इट. ऐसे ही कुछ और आप जादवपुर यूनिवर्सिटी को भी जानते हैं जो कि यहीं से है, कैलकाटा मैथमेटिकल सोसाइटी को भी जानते हैं, और बोस इंस्टीट्यूट which was actually founded by Sir Jagdish Chandra Bose in 1917. ये कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ डिस्प्ले की हैं, जो शायद अब नहीं है और या उनमें म्यूजियम्स हैं. तो ये सारी बिल्डिंग्स उस जमाने में जो है वो यहाँ पर स्टैब्लिश की गई. उन्होंने क्या किया कि सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं स्टैब्लिश की, उन्होंने कुछ जर्नल्स भी चलाए. जर्नल किसको कहते हैं? जर्नल उनको कहते हैं जैसे आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं उसी तरीके से साइंटिफिक जर्नल होते हैं, जिसमें जो भी आप काम करते हैं वो उसमें आप छापते हैं, प्रिंट करते हैं. क्यों प्रिंट करना चाहिए? प्रिंट मीडिया की जरूरत इसलिए है, जैसे आज आप सोशल मीडिया से काम चलाते हैं, अगर उस समय से प्रिंट मीडिया होता था तो प्रिंट मीडिया से ही वो आप तक पहुंच सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं, दे कैन टॉक अबाउट देयर वर्क. So that is why they have started their own journals also. So now I'm coming back to those people, for those 5 people about whom I have to talk. So here it is written Professor G.N. Ramachandran, और बहुत सारे लोग डॉक्टर रामचंद्रन को रामचंद्रन प्लॉट से जानते हैं, जो शायद आपके यहाँ 10वीं या 11वीं या 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, प्रोबेबली उनकी बुक में कहीं रामचंद्रन प्लॉट होगा. पहले, बहुत पहले मुझे ये पता है कि यूपी बोर्ड में ये होता था, मुझे अभी बंगाल बोर्ड का पता नहीं है, सीबीएसई बोर्ड का पता नहीं है. सो डॉक्टर जी.एन. रामचंद्रन ने सबसे पहले एक he has given the structure of the triple helix, and he has given the structure of collagen, which was having a triple helical structure, and he also invented the Ramachandran plot. And what is the Ramachandran plot? Ramachandran plot talks about the structure of the protein. आपने प्रोटीन पढ़ा होगा, अमीनो एसिड पढ़ा होगा, ठीक है, कहीं कहीं इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा होगा. प्रोटीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उसका स्ट्रक्चर समझना इतना आसान नहीं है. उन्होंने कुछ ऐसे कैलकुलेशंस किए, कुछ ऐसे प्लॉट ड्रॉ किए, जिससे आप बहुत आसानी से एक बहुत बड़े प्रोटीन स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, उसका सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर के बारे में सोच सकते हैं. और आप ये सोचिए कि जब उन्होंने रामचंद्रन प्लॉट दिया तो उन्होंने कुछ छोटे छोटे पेप्टाइड्स के बेसिस पे और छोटे प्रोटीन्स के बेसिस पे वो प्लॉट किया, और वो प्लॉट आज तक ट्रू है. वंस अगेन आई वुड लाइक टू, यहाँ उनकी पूरी हिस्ट्री है, और आप अगर देखेंगे तो कब उन्होंने पढ़ा, क्या किया. लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर जी. रामचंद्रन ने को कभी भी उनका ड्यू जो रिस्पेक्ट थी वो इंटरनेशनली नहीं मिली. He never got a Nobel Prize, whereas the people have recognized quite later about him, and he has got his due recognition on a very later part of his life. तो अगर आप यहाँ पे मैंने I have given it कि एक स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए बनाया है. कोलेजन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और जब हम इसको अल्फा हेलिक्स कहते हैं तो ये है, लेकिन जिसको मैं आपके लिए ट्रिपल हेलिक्स कहती हूँ, मैंने बहुत सिंपल डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया है जिससे आपको समझ में आए. सो व्हाट ही डिड दैट, उन्होंने कोलेजन का स्ट्रक्चर दिया, और वो जो उन्होंने कोलेजन का स्ट्रक्चर दिया, लेटर ऑन थ्रू क्रिस्टलोग्राफी द सेम स्ट्रक्चर वाज गिवन फॉर द कोलेजन विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस. और उन्होंने एक साइंस का बहुत बड़ा जर्नल होता है जिसको आप नेचर कहते हैं, उसमें 1954 में पब्लिश किया, जब इंडिया से कोई भी पेपर नेचर और साइंस में पब्लिश नहीं होते थे. एंड अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी कभी से केमिकल स्ट्रक्चर को देखा होगा, तो आप कभी भी किसी पेप्टाइड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं तो उसमें कुछ एंगल्स आते हैं, और उन्होंने उन एंगल्स को साई फाई ये नाम दिया, और उस साई-फाई एंगल को उन्होंने प्लॉट किया एक्स और वाई एक्सिस पे, और उसके बेसिस पे उन्होंने एक प्लॉट दिया. और उस प्लॉट के बारे में, उस प्लॉट को आप नेक्स्ट किसी इसमें देखेंगे
एलेनिन एक अमीनो एसिड है, आर्जिनिन एक अमीनो एसिड है, ग्लूटामिन दूसरा अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन एक दूसरा, एंड प्रोलिन एक जो है वो अनकन्वेंशनल अमीनो एसिड है, ठीक है। उन्होंने इनको ये इसको रामचंद्रन प्लॉट कहते हैं। इसके 4 क्यूबिकल्स हैं अगर आप देखने की कोशिश करें। And I would like to say apologize to some of the seasoned scientists because I'm trying to give them an information in a very simple words. Maybe somewhere I'm not using a true scientific word, but I want that the students should understand. So what has happened that through the Ramachandran plot, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि there is a allowed region, there is a left-handed alpha helix, there is a right-handed alpha helix. So what they're trying to tell you that if these kind of amino acids will be there, then the resultant protein will have a certain kind of a structure, means it will be having a right-handed helix or the left-handed helix. ये right-handed helix और left-handed helix का मतलब क्या है? Right-handed और left-handed helix का मतलब है, मेरे पास यहाँ पे मॉडल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि आप जब आप N टर्मिनल से शुरू करेंगे और C टर्मिनल पे जाएंगे किसी भी प्रोटीन के, तो वो आप जब मूव करेंगे तो वो राइट हैंडेडली मूव होगा या वो लेफ्ट हैंडेडली मूव होगा. सो यू कैन इमेजिन the strength of the science that by the psi-pi angle, by measuring the psi-pi angle, he could give you the structure of the proteins. आप ये कहेंगे इसकी जरूरत क्यों है आपको? इसकी जरूरत आपको इसलिए है, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन हैं जो कि प्रोटीन में कुछ मॉडिफिकेशन या प्रोटीन में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आपको होती है. तो अगर आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप उसके अगेंस्ट ड्रग डिजाइन कर सकते हैं. यू कैन डिजाइन द लिगेंड एंड यू कैन इनहिबिट दोज प्रोटीन्स व्हिच आर नॉट द गुड प्रोटीन्स. सो रामचंद्रन ने एक स्कूल बनाया जो मैं पर्पसली यहाँ आपको बताना चाहती हूँ. Ramachandran was the founder of the Madras School of Confirmation Analysis of Biopolymers, and he has created this Ramachandran plot, which आपने DNA की डिस्कवरी के बारे में पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि वॉटसन एंड क्रिक ने DNA डबल हेलिक्स की डिस्कवरी की थी. So even he was the first person who said that okay, there is a double helical structure of the DNA which Watson and Crick has given. But he said that there is a triple helical structure also exists, which was not known till that day. So, and then Professor G.N. Ramachandran, there was a G.N. Ramachandran Gold Medal Award was established by CSIR, and that is being given every year, and very recently, some 20 days before, it has been given to lot many Indian scientists this year. अभी मैं आती हूँ आपके सेकंड साइंटिस्ट के ऊपर, दैट इज हरगोविंद खुराना. डॉक्टर प्रोफेसर हरगोविंद खुराना गॉट अ नोबेल प्राइज, ठीक है, और 1968 में इनको नोबेल प्राइज मिला, एंड ही शेयर्ड इट विद द 2 अदर साइंटिस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज. एंड इनके नोबेल प्राइज को लोग को आप ऐसे जानते हैं that they have given a Nobel Prize, they have been got the Nobel Prize, he has got the Nobel Prize for the DNA synthesis. आपने डीएनए बहुत पढ़ा होगा और आपने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको आप कहते हैं डीएनए आरएनए आप जानते होंगे, लेकिन डीएनए आरएनए आपको ये पता है कि वो आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, लेकिन डीएनए आरएनए की सिंथेसिस भी करनी पड़ती है. अगर आप उसको सिंथेटिकली बनाएंगे तभी आप जिसको आजकल रिकॉम्बिनेंट डीएनए सिंथेसिस, जिसको आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं, तो जितनी भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आज परसी होती है वो इसलिए होती है बिकॉज डॉक्टर मेरीफील्ड ने और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आपको डीएनए सिंथेसिस और पेप्टाइड सिंथेसिस लैब में करके दिखाई. सो दे वर द फर्स्ट पीपल हु हैव सिंथेसाइज्ड दी. और वो कहीं आप अगर उनका कैरियर देखेंगे तो आपकी तरह ही पंजाब की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वो आपकी तरह ही कुछ स्कूलों में पढ़ के बड़े हुए और उन्होंने साइंस की एजुकेशन को परस्यू किया, उसको समझने की कोशिश किया, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, एंड उसके बाद वो यहाँ से फॉरेन कंट्रीज में गए, फिर वापस आए अपने देश में. प्रोफेसर खुराना के लिए एक चीज कही जाती है कि जब वो एक बार इंडिया वापस आए, ही कुड नॉट फेच अ जॉब फॉर हिमसेल्फ. आप ये सोच सकते हैं हाउ अनफॉर्चुनेट इट वाज दैट सच अ काइंड ऑफ अ टैलेंटेड पर्सन did not get a job for himself. Then he went back to MIT, and then in the collaboration of a couple of scientists,
he has started working and he has done the synthesis of DNA. What do you mean by synthesis of DNA? मैं बहुत simple form में आपको समझाना चाहूंगी. अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे एक शुगर है, एक फॉस्फेट है, so you can see here that, और यहाँ पर एक बेस है. तो ये आप कहते हैं न्यूक्लियोसाइड और इसको आप कहते हैं न्यूक्लियोटाइड. इसको बनाने का एक मेथड इन्होंने लिया और यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल सा रिएजेंट है जिसको कहते हैं डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइमाइड. आपको थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन he has given this particular reagent and this reagent has given you the strength of synthesis of oligo, first for the synthesis of nucleotide and then it was converted to the oligonucleotide. So he has synthesized an oligonucleotide and ये इस तरीके की chain होती है, एक nucleotide उसमें दूसरा nucleotide. So what he developed that how you can take one nucleotide and add to the another nucleotide and you can make a chain of nucleotide and that is called, you can make the synthetic DNA. So, and then he has, first of all, he has also standardized the method of purification of the DNA. तो क्योंकि जब आप न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे तो आपको सही जो आपका सीक्वेंस है, हाउ विल यू रियली प्योरीफाई, सो ही डेवलप्ड द मेथड आल्सो. यहाँ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ और यहाँ सेंटेंस लिखा है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन who has synthesized the trinucleotides genetic code of all 64 trinucleotides. जेनेटिक कोड की सिंथेसिस करने वाले भी वो पहले थे, लेकिन अगर उन्होंने कभी न्यूक्लियोटाइड बनाया ही नहीं होता तो शायद सिंथेटिकली कभी भी ट्राइन्यूक्लियोटाइड्स बनते नहीं. So that is how he has done it, and this is the excerpt from his Nobel lecture, जिसको भी Nobel Prize मिलता है. Every year they give the Nobel lecture in front of the Nobel Academy, which was, so he gave a Nobel lecture over there, and he was so nice a person that he has given multiple thanks to his collaborator rather than giving all the credit to himself. So this is all about this. And Professor Khurana was one of the scientists who has actually laid the stone for the molecular biology. Today, आप में से कुछ लोग जानते होंगे बहुत सारे enzymes, polymerases, DNA ligases, PCR reactions, बहुत सारी चीजें जो आज establish हुई हैं, उनको अगर प्रोफेसर खुराना ने ATP, AMP, cyclic AMP, cyclic GDP, GMP, अगर उन्होंने इस तरीके की चीजों को नहीं बनाया होता तो शायद ये सारी चीजें एस्टैब्लिश नहीं होती. कई बार आप बहुत सारी बेसिक रिसर्च करते हैं, उस समय ऐसा लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है या ये बहुत यूजफुल नहीं है, बट लेटर ऑन यू फाइंड इट इज रियली यूजफुल एंड इट lays the foundation for the new research. So this is what he has done. And जो एक बात मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि इनके नाम पे इंटरनेशनली एक जो खुराना फाउंडेशन है, and there are Khurana scholars are being given the scholarship to travel all over the world and pursue the science. This you can apply when you go to the college, and you can be a Khurana scholar also. And in between, for some years, they were even calling some of the school students also for these things. So these kind of fellowships are there, which can be utilized by some of you to become the eminent scientists or learn the science. Now I'm coming to the third scientist, Professor Sambhunath Dey. And Professor Sambhunath Dey is a scientist, once again, was a scientist from the Calcutta, and he has demonstrated a method about the transmission of the cholera. Cholera का scientific name होता है Vibrio cholerae, right? और cholera was a epidemic. आज भी ये epidemic है, लेकिन it has been reduced a lot in India. But he was the first person who has given the new method that was very different from the international way of interpreting the cholera pathogenesis. Pathogenesis का मतलब है कि disease कैसे फैलती है आपकी बॉडी में, वो कैसे स्प्रेड होती है आपकी बॉडी में. तो this is about that. So what he did actually, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके बारे में पढ़ूंगी नहीं उनके बारे में, लेकिन आपको बस मैं ये बता सकती हूँ कि he was from Calcutta
एंड लास्ट में मैं कुछ इनके बारे में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देयर वाज information that the cholera pathogenesis occurs through the endotoxin. So it was said that the cholera जो आपकी body में होता है, that is because of the release of the endotoxin. But he said no, it is not correct. He said that in 1959, Professor Shamunnath Dey said that the cholera bacteria secrete enterotoxin. He gave information, and he used to work in some other lab. He has no particular lab, so he used to travel, he used to go to the other lab, and he used to work there, and he used to show that, and he showed it that cholera bacteria secretes enterotoxin, and this enterotoxin actually causes the cholera. And when he gave this thing, then he said that if we can neutralize these enterotoxin, then we can save the cholera patient. And cholera endemic जब भी epidemic हुआ, तो उसमें करीब 50% लोगों की death हो जाती थी. And Professor Shamunnath Dey has given a very simple solution that if you give the patient enough amount of the fluid, आपकी माँ, आपके टीचर आपको बहुत बार ये बताते होंगे कि जब आपको कोई डायरिया हो जाए तो आपको जो है नमक और पानी का मिला हुआ वाटर पीना चाहिए. आज वो मार्केट में भी अवेलेबल होता है, that is there. लेकिन ये said that अगर हम enough of fluid दें और enterotoxin को neutralize करते जाएं, तो patient जो है उसकी death नहीं होगी, and we can save the patient. And by his method, the 50% death of the cholera patients have come to the 1% death of the cholera patient. But what was the most unfortunate part was there that initially people were not accepting his science. Initially he was very shy to publish his work. Then when he got when people accepted his science, by that time he was nominated by a couple of people for the Nobel Prize or several prizes. He did not get any prize. After 20 years of the effort, he got one travel grant to travel up to the Nobel Academy, and he just went there and he spent some time and he delivered a lecture over there. And he was in depression for several years. He was not in depression because of that. He was not asking for the money. He was asking for the recognition. He was asking for the acceptance of his son. So these are the few things. So this is once again a eminent scientist, but who remains uncelebrated because of, I would say, that it was the weakness of Indians also at some points of the time. So now I'm coming to the Professor Sipra Guha Mukherjee. Professor Sipra Guha Mukherjee was again a botanist and molecular biologist. Professor Sipra Guha Mukherjee has studied in the Delhi University, and then while he was serving in the Delhi University, he was doing the PhD. She has found a new method of developing the plants which are haploid plants. You always talk about the diploid plants, but she was the first person who said that the haploid plants can be also developed, and people have been trying to do that from several years and they were not successful. But during her PhD program, for the first time, she could develop the haploid plants. And when she developed the haploid plants, now the question arises, why do we require the haploid plants? Haploid plants are more serene plants. They are less attacked by the diseases. They are easy to be produced, and we require the haploid plants. And when she developed the haploid plants she initially it took some time to establish herself, and she has developed several techniques. Not only she developed for herself the haploid plants, she has developed several techniques of the plant genetics, so that the hybridization of the plants are possible, development of the haploid plants of the anther is possible. So she has developed several techniques. But again, what happened when she asked for the faculty positions from Dr. Maheshwari,
what she was says, no, we cannot give you a job because you are a female. You will get married, you will be pregnant, and then you will not come back for the science. So then she fought for her position, and finally she got a job. She traveled abroad, and she has written in her book that even in America, even in the Western countries, the females in scientists were not getting the recognition. Then she came back to India, and she established a school which was called as the School of Life Sciences in Jawaharlal Nehru University in Delhi. And she established that schools. She has started a new class of science which was called as the plant molecular biology. Till then, plant molecular biology was not an accepted science in India. And even internationally, people were not interested in the plant molecular biology. Today, you talk about the different breeds of the plants, modified breeds of the plants, but I would say you that still, if you find she was alive till 2006 or 7, and but still, up to very long time, Indians did not utilize her science in a way another country, and which country once again utilized it? China. China invited her, China utilized her know-how, and they have developed so many different breeds which can survive in the droughts also, in the less water, in the very cold situation, very hot situation. So they have developed with the help of her, and they have given her the due course, and she has given training to the lot of Chinese students and later. So once again, I would like to say that we are so busy in ourselves, we are so busy in developing our own career that we forget the heroes, and that happens very often in India with the scientists. So we have to be really cautious about it, and we have to see that if there is a talent, we have to catch them young. So there is a program should be started which is called as a Catch Them Young Scientists. We should try to catch our young scientists and nurture them to become the wonderful scientists. So this is one of the photographs of the haploid wheat which she developed. So I'm not reading all these things. I will leave these slides in the Hindi medium with the organizers, and any one of you can collect it and you can read it. And I have purposely written it here not to tell you about these details so that you can read it and you can really develop your know-how from that. So now I'm coming to the Professor Ubaid Siddiqui, who is my last hero here. So Professor Ubaid Siddiqui was, here it is written, founder, director of the Tata Institute of Fundamental Research, National Center for Biological Sciences. Professor Ubaid Siddiqui have worked with a number of organisms, but his work is most famous, which he did on the fruit fly, जिसको आप scientifically you call it Drosophila melanogaster. Fine. So आप में से बहुत कम लोग होंगे जो इस चीज को समझते होंगे शायद, या आप जब बड़े होंगे और कॉलेजेस में जाएंगे तो आप समझेंगे. जब भी आप किसी डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, आपके पास कुछ यू शुड हैव सर्टेन मॉडल्स. मॉडल का क्या मतलब है? आपको ये टेस्ट करना है कि ये दवाई काम करेगी कि नहीं, ये मेडिसिन काम करेगी कि नहीं, ये इंजेक्शन काम करेगा, ये वैक्सीन काम करेगी कि नहीं. तो आप ये सारे टेस्ट ह्यूमंस पे नहीं कर सकते. इन टेस्ट को किया जाता है कुछ एनिमल्स पे, और पहले कुछ स्मॉल एनिमल्स पे और फिर कुछ लार्जर एनिमल्स पे. तो पहले वो ज्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो आपके रैट, माइस, रैबिट, मंकीज, डॉग. तो आप इन सारे टेस्ट को आप जो है वो कुछ एनिमल्स पे करते हैं, और वहां जब ये प्रूव हो जाता है साइंटिफिक प्रिंसिपल, तब आप इसको आगे लाते हैं. दैट इज हाउ यू ब्रिंग इट फर्दर. राइट. सो हाउ वुड यू. तो इसी तरीके से प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी ने बहुत सारी स्टडीज की फ्रूट फ्लाई पे, या जिसको आप कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे. और क्यों किया? क्योंकि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की जो साइकिल होती है दैट इज फॉर 14 days, और बहुत जल्दी आप इसके ऊपर स्टडीज कर सकते हैं. बहुत सारी
स्टडीज करी, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं जो कि ह्यूमन जीन्स के बराबर होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इसलिए आप अगर उस पर कोई स्टडी करते हैं, आप उसको एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं ऑन द ह्यूमंस ऑल्सो। So he has done lot of studies there. One study was very famous, which was called as the discovery of the nonsense mutations or the nonsense codon, which he did. And what he did, that he has found it in the nonsense mutations in the bacteria, and which has later on became which has played a role in the discovery of the nonsense codon. So that is. What is the nonsense codon? This work has an important role in the discovery of the nonsense codon in the genetic code, the stop signals in the genetic code and mechanism of chain termination during protein synthesis. So what has happened that that nonsense codons are the part of the codons of the system in the physiology where they are found and they are responsible for the termination of the synthesis. बट आप कहेंगे कि टर्मिनेशन की जरूरत क्यों है? हर चीजों की इनिशिएशन की भी जरूरत होती है और टर्मिनेशन की भी जरूरत होती है व्हेन ए रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर हैज बीन ऑलरेडी ऑब्टेन्ड, राइट? तो उन्होंने एक और लोग ये कहते हैं कि ही वाज द ओनली पर्सन हु वर्क विद सेवरल ऑर्गेनिज्म। लोग एक ऑर्गेनिज्म के साथ काम नहीं कर पाते हैं। उन्होंने इकोलाई, ड्रोसोफिला, मेलानोगास्टर, सेवरल ऑर्गेनिजम्स के साथ उन्होंने काम किया और उन ऑर्गेनिजम्स में उन्होंने बहुत सारी चीजों को आइडेंटिफाई किया। और एक और काम उन्होंने किया था जिसको मैं आपको बताना चाहूंगी, उनके कंट्रीब्यूशन को। उन्होंने ऑल्फैक्टरी नर्व्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये दिखाया ड्रोसोफिला में कि अगर आप उनके अंदर वो जीन्स जो उसमें सेंसेस, हियरिंग या जो आपकी स्मेल सेंसेस को अगर आप किसी तरीके से शट डाउन कर दीजिए तो वो जो ड्रोसोफिला होते हैं वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं अदर देन द ड्रोसोफिला वेयर दोज सेंस जीन्स आर देयर। इसका एक बहुत ही रीसेंट यूसेज अभी एनसीबीएस में हो रहा है और उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन खुद डेवलप किया, पहले लोगों को नर्चर किया और खुद उन्होंने, तो डॉक्टर उबैद सिद्दीकी इज ऑल्सो फेमस फॉर एज ए इंस्टीट्यूशन बिल्डर, और जिसको आप PIFR कहते हैं और NCBS कहते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि पहले बहुत सारे साइंटिस्ट को हायर किया, उनको ट्रेन किया, फिर एक इंस्टीट्यूशन बनाया और फिर उनको बहुत सालों तक ही हैज ऑल्सो नर्चर्ड देम एंड ट्रेन देम दैट हाउ कैन दे नर्चर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द साइंटिस्ट ऑल्सो। तो जो उनकी वो खोज थी या जो डिस्कवरी थी, वॉट एवर वाज द डिस्कवरी, उसको यूज आज इस तरीके से करते हैं। आपने सुना होगा कि कोविड-19 में बहुत सारे लोगों को जो है वो स्मेल सेंसिटिविटी कम हो जाती है उनकी, तो उन्होंने ये बहुत क्लियरली दिखाया है अभी NCBS के साइंटिस्ट ने कि आप जो है वो कोविड पेशेंट में they published it also, उन्होंने शो किया कि कोविड डायग्नोस्टिक की इस आदमी को कोविड है या नहीं है, that can also be done by the smelling activity of a patient. If a patient has less smelling activity, they have been identified it very clearly, you can diagnose that this particular person is having the COVID also. If it is a non-symptomatic COVID also there, even then you can do it. So, एक डिस्कवरी जो बहुत साल पहले हुई थी, उसका यूटिलाइजेशन आज भी हम और किसी डिजीजेस के यूटिलाइजेशन में डिजीज के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। सो विद ऑल दीज थिंग्स आई एम नॉट गोइंग, these are the Ubaid Siddiqui's when he was very young, he was very smart, his photographs are there, he's with the Francis Crick और के साथ वो discussions कर रहे हैं, these are the photographs of him. So with all these things, what I want to tell all of you here, that I told you about these stories not because that they are unsung hero and I wanted to tell you, I wanted to inspire you also, and I want to tell you that science करने से हमारे देश को फायदा होता है, हमारी सोसाइटी को फायदा होता है। और एक चीज जो आपको समझनी चाहिए अगर आप शंभुनाथ देव के काम को समझने की कोशिश करें कि हम बहुत सारे लोग जो हम साइंस करते हैं,
हम लोकल प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं करते. इफ वी रियली हैंडल आवर लोकल प्रॉब्लम, राइट, जो हमारे देश की प्रॉब्लम है, अगर हम उसको हैंडल करें तो हम ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं. एंड दैट इज हाउ, इसीलिए आप देखते हैं कि आज की डेट में आत्मनिर्भर भारत की बात की जाती है. आज ये बात की जाती है कि आप खुद बनाएं, खुद यूटिलाइज करें उसको, और खुद ही उसको सिर्फ बनाएं या यूटिलाइज ना करें, अपने देश से बाहर उसको एक्सपोर्ट भी करें. तो दिस इज व्हाट इज, जिसको आप सो माय ओनली से रिक्वेस्ट, और कह सकते हो कि तुम लोगों से मेरी एक बात करने का ये तरीका था, ये जो लेक्चर है. और आप लोग जैसे लोग बहुत, आई वुड से यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट आपको ऐसे लेक्चर सुनने को मिलते हैं. जब हम लोग पढ़ते थे, हमें कोई इस तरीके की कोई भी ओपनिंग्स नहीं होती थी. वी नेवर हैड सच अपॉर्चुनिटीज. सो विथ ऑल दीज थिंग्स आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर Ranjan Singh, Director IACS, Registrar IACS, and the whole organizing committee of the IACS, and Dr. Rao and Dr. Ayanda for giving me this opportunity to interact with all of you. And thank you very much, and I hope you have understood, even 10% of my lecture, you have understood my job is done. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, ma'am, for such a wonderful and informative introduction. So my history. प्रश्न থাকলে করতে পারবেন না? Thank you so much. The second invited lecture will be delivered by Dr. Chandrima Shaha. She is the Decibel Chairperson Professor, CSIR, IACD. May I request the ma'am to come and say. So I would like to first thank IACS and the IISF organizers for this kind gesture. আমি ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে বলবো তোমাদের ছোট বন্ধুরা. তোমাদের দেখে আমার একটা কথা, আমার একটা পরিচয় উনি দিয়েছেন, কিন্তু আমি বেসিক্যালি একজন সায়েন্টিস্ট, এবং আমি তোমাদের দেখে আমার একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, নিজের ছোটবেলার কথা. যখন আমি তোমাদের মতন ছিলাম, তখন আমি কি করতাম, তখন আমি বনে জঙ্গলে বাগানে গিয়ে ছোট ছোট ক্যাটারপিলার জোগাড় করতাম, তাদের বোতলে রাখতাম, দেখতাম তারা কি করে প্রজাপতি হয়. আবার আমার বাবা একটা ছোট মাইক্রোস্কোপ কিনে দিয়েছিলেন, সেটার তলায় পুকুর থেকে জল এনে দেখতাম, সেখানে কি দেখতে পাচ্ছি. আর ছোট একটা টেলিস্কোপও ছিল আমার, সেটা দিয়ে দেখতাম, আকাশের তারা দেখতাম. এখন তো বড় বড়, তোমরা পড়েছো নিশ্চয়ই টেলিস্কোপের ব্যাপার, কত বড় বড় টেলিস্কোপ হয়ে গেছে. সো ওই সময় একটা কিউরিয়াসিটি ছিল, এবং আমি জানি তোমাদের মধ্যে অনেকেই এরকম কিউরিয়াসিটি তোমাদের আছে, এবং এইটা তোমাদের মধ্যে রাখতে হবে. তোমরা যদি সায়েন্স করতে চাও একটা সময়, দেখবে ইউ হ্যাভ টু বি কিউরিয়াস. আমি যেটা বলতে, আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট জার্নি অফ আ সায়েন্টিস্ট, অর ওয়াই ইউ শুড ডু সায়েন্স. So, why do science? So, একটা কথা হচ্ছে যে science কি দেয় তোমার? It's a solution for everyday life. আমরা সকালে উঠে তোমরা যে সুইচ জ্বালো, তোমরা যে দাঁত মাজো, তোমরা যে আলো জ্বেলে থাকো, everything is a contribution of science. So, science is all around you, and you have to ask questions, and that's how you do science.
So science can actually develop necessary technology for our well-being, and also science addresses problems like food production of the world. তোমরা তো জানো আমাদের পৃথিবীতে billions and billions of people are there, so who's going to feed them? So science finds a way to feed people and also supply energy. তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো যে আমাদের এনার্জি ক্রাইসিস হচ্ছে, আমাদের ফসিল ফুয়েল কমে আসছে. So these there has to be some substitute for generating energy for the world to run our electricity, run our everything of our life. So, and then cure diseases, finding drugs for diseases. কত রকম নতুন ডিজিজ হচ্ছে, যেমন COVID-19 হয়েছিল যেটাকে আমি এখানে এমার্জিং ডিজিজ বলেছি, সেরকম তাদের ভ্যাকসিন তৈরি করা, ড্রাগ তৈরি করা. So those are very essential things that science does. So if you are a scientist, eventually you will contribute to the society as well. সেইটা তোমাদের এখন থেকে বুঝতে হবে যে তোমরা সায়েন্স, এবং তোমরা সায়েন্স কেন করবে সেটাও আমি বলছি তোমাদের. আর সলভ মিস্ট্রিজ অফ নেচার, তোমরা যেটা আমি বললাম আমার ছোটবেলায় আমি দেখতাম, ইট ওয়াজ মাই এইম টু সি হাউ নেচার ওয়ার্কস. তো সেটা তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো যে কি করে একটা শুয়োপোকা থেকে একটা প্রজাপতি হয়, তার মধ্যে কি আছে, কি করে, হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক. তো সেরকম ইভেন্চুয়ালি আমাদের সায়েন্স ইনফ্লুয়েন্সেস আওয়ার কালচার অ্যান্ড আওয়ার সিভিলাইজেশন. এর ছবি তোমরা দেখছো, you know very well who he is, Albert Einstein, and what he said is that the important thing is to never stop questioning. So you have to keep on questioning the things around you, and that is how you develop your scientific curiosity. So these are very few questions that I put. That there's a very general question that you can ask, like why the sky is blue, why the ocean is blue, why the color of the ocean is blue, why does rainbow have 7 colors? কোনদিন তোমাদের মনে হয়েছে যে রামধনুতে 7টা আলো কেন? তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো, তোমরা জেনারেল সায়েন্স তো পড়ো, আমি নিশ্চয়ই পড়েছো. And like why the leaf color is green, why how did humans evolve, আমরা কোথা থেকে এলাম, কি করে এলাম, এসব তো তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো, you must have read about it. So if you look around the world, তোমরা দেখো কত রকম প্রজাতি আছে. So many different species we have around us. So the birds have about 10,000 species, the amphibians more than 8,000, mammals more than 5,000, fishes more than 30,000 species. Then reptiles more than 6,000, and invertebrates more than 100,000 of species. So there are so many things, so many, and this we can see by naked eye. You can watch them all around us. Well, some of the animals that you see, you must have seen a snake, you must have seen so many birds. So, but if you look at the microscope, it's altogether a different world. কে আবিষ্কার করেছিলেন মাইক্রোস্কোপ? কেউ জানো? মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেছেন তিনি and Leeuwenhoek. She is the first human being to observe something moving under a microscope, the bacteria moving under a microscope. So Antony van Leeuwenhoek was not a scientist. He was a lens maker, and he was a draper who used to sell clothes, and he used to look ওর সুতো মোটা হচ্ছে না সরু হচ্ছে সেটা দেখতেন মাইক্রোস্কোপের তলায়. কিন্তু উনি প্রথম মানুষ যিনি দেখেন মাইক্রোস্কোপের তলায় লিভিং ওয়ার্ল্ড. So this is actually van Leeuwenhoek, and the telescope was discovered by this person Hans Lippershey, who also made a telescope. Eventually it was much improved by Galileo. তোমরা গ্যালিলিওর নাম নিশ্চয়ই শুনেছো, তিনি একজন বিখ্যাত অ্যাস্ট্রোনমার ছিলেন. তো সেই গ্যালিলিও টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশে অনেক কিছু বলেছিলেন, কোন তারা কোন গ্রহ কি হবে না হবে. So he also looked at planets, he looked at stars, and he predicted many things that we later on came to record by our more modern instruments. So coming to cells, like you can also under the microscope, if you scrape your cheek,
and you take out, you actually take out cells, and you can see those in under the microscope. So, our bodies are composed of cells that you have studied, right? You study cells. So, we are composed of so many cells. These are cells. Some of these are dividing, some of these are not dividing. But total cells in our body is how many? 100 trillion cells. 100 trillion, meaning 14 zeros after 1. So we are composed of so many cells that you, I, myself, somebody else, we are composed of trillions of cells. So, have you ever thought where did these cells come from? You see, it came from a single cell. A single cell. Trillion cells came from single cells. So at fertilization, when the zygote is formed, all of us start our life as a zygote, and that divides to form a wall of cells, which is called a morula, and that will eventually give rise to this human. In this case, it's a human. It's true for all organisms, and so the life starts like this. And now, what happens is, if you have this ball of cells, which is called the morula, and can you tell me what happens if this morula kept on dividing? So it will all, it's embryo, but it keeps, if it kept on dividing just like that, all of us will have no hands, feet, nothing, we will be just a round ball of cells. So there's a way how nature has ensured that the organisms are formed. So if you look, this is how it happens, that there is cell birth and cell death. That actually makes an organism. So if you look at a sculptor who has got a piece of stone, so he has a piece of stone, and he has to chisel out a shape like this. So how does he do it? He chisels the stone and gives it a shape. So exactly that is how the cell death and cell birth shapes the organisms. So if you look at this, that we are all born with our hands, which are joined, the fingers are joined by cells. So those cells has to die so that we can move our fingers. That is very important, and that is where cell death is very important. So we see that these cells will die. We are born like this. We are inside the womb like this, and before we are born, these cells die, and we have our hands. And if the cells don't die, what happens is that your fingers are not separated. You find people whose fingers are not separated. So that is improper cell death. So which shows that cell death is a very, very important event in case of cells, in case of our body cells. So this is another example where you can see that how a duck whose cells haven't died here, because nature has ensured that the duck has to swim. So how does the duck swim? It has to use those paddles. It has to use those paddles to swim. But the chick doesn't need those. The cells die there by in the process of cell death. And so these are the two evolution ensures that according to your requirement, your cells will die or it will not die. So now, do cells die in adults? 1 billion new cells are born per day, and as many as 10 to the power 10 to 10 to the power 11 cells die per day in us. As you and I here, we are sitting here, we are talking, our cells are dying, and our cells are being born. So, it is estimated that within a typical year, so many of our cells die that we lose our entire body weight. So this is very important, cell death. So if you look at this, that they are normal cells, we have normal cells, we have dying cells, red cells are dying cells. But what happens if all the cells die? Then we won't exist. So we will just disappear. So what happens is, it's a balance between our dead cells and live cells that we live. We have both
dying cells and living cells. So this is the cell birth and cell death gives us the life. So we are living with millions of cells being born, millions of cells being dying. And what happens when cells do not die? We get tumors, we get birth defects as well. You know that people are sometimes born with birth defects, and that is why cells are not dying at a proper time, at a proper place. And so that's why we get tumors. Tumor হয় তোমরা জানো যে যদি সেলের বেশি গ্রোথ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু হতে পারে। আচ্ছা, তো সো এই যে সায়েন্টিস্ট এরপরে প্রশ্ন করেছিলেন যে why, how do cells die? মানে সেলস মারা যায় তাহলে কি করে মারা যায়? এর তো কোনো স্টিমুলাস থাকবে, কিছু থাকবে, কি করে মারা যায়? How do they die? So এই যে একটা ওয়ার্ম, এই ওয়ার্মটা একটা ভীষণ সুন্দর একটা মডেল। এই তার বডিটা পুরো ট্রান্সপারেন্ট এবং সেখানে সেলস গুলো তুমি মাইক্রোস্কোপের নিচে পরিষ্কার দেখতে পাবে। তো একটা সেলকে তুমি ফলো করতে পারো, একটা একটা করে সেলকে কোনোভাবে লেবেল করে ফলো করা যায়। এবং সেই এইটা হচ্ছে এটা একটা নেমাটোড ওয়ার্ম, এর নাম হচ্ছে সি এলিগেন্স, এবং এইরকম করে তার সেল লেবেল করা যায়। এবং তার বডিতে আছে 1090টা সেল, আর তার মধ্যে 131টা সেল মারা যাবেই যাবে, আর যদি না যায় তাহলে সে abnormal growth হবে। So this was a very important model for study of cell death. So what happened was, this gentleman, Sydney Brenner, who was a brilliant scientist, a total brilliant scientist, তিনি এই ওয়ার্মটাকে এস্টাবলিশ করেন as a model for study. And আরো দুজন আছেন, রবার্ট হরভিটস এন্ড জন সালস্টন, তারাও আবিষ্কার করেন যে একটা সেট অফ জিনস এই সেল ডেথটা কন্ট্রোল করে। তো এই সেট অফ জিনস এর তারা নাম দেন, যেমন AGL1, SED9, SED4, SED3, যেগুলো সেলুলার অ্যাপোপ্টোসিস বা সেল ডেথ করে। সুতরাং কিন্তু তার জন্য তারা নোবেল প্রাইজ পান। কেন নোবেল প্রাইজ পান? কারণ এই মডেলটা এত ইম্পর্টেন্ট মেডিকেলি যে তোমার সেল ডেথ যদি ঠিক মতো না হয়, ইউ উইল গেট ক্যান্সার, ইউ উইল গেট টিউমার। তোমার সেল ডেথ যদি বেশি হয়ে যায় তাহলেও প্রবলেম, ইনফার্টিলিটি হয়, অর্গান ইনসাফিসিয়েন্সি হয়। সুতরাং এটা মেডিকেলি এত ইম্পর্টেন্ট একটা অবজারভেশন and a work that they got the Nobel Prize in Medicine in 2002. So cell death খুব neat form of death. তোমরা যদি একটা সেল আস্তে আস্তে shrink করে, তারপরে ব্লেব করে ছোট 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 প্যাকেট হয়ে যায়, and those packets are eaten by the defensive cells that we have. তোমরা অতটা পড়েছো কিনা আমি জানি না, কিন্তু সেইটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট। তোমাদের যদি ছবি দেখাই দেখবে এটা হচ্ছে, this is a dividing healthy cell and this is a dying cell. So dying cell looks like this, and so it's dividing into little packets, and these packets don't burst. Because they don't burst, there is no inflammation in the body, so it's called a very neat form of death. So this is very important. তোমরা যখন বড় হবে, তোমরা যখন সায়েন্টিস্ট হবে, তোমাদের মধ্যে কিছু নিশ্চয়ই সায়েন্টিস্ট হবে, কিছু সাহিত্যিক হবে, কিছু খেলোয়াড় হবে। So you have all options open to you. যা অনেকে সায়েন্টিস্ট যারা হবে তারা তখনও দেখবে এই ফিল্ডে রিসার্চ করছো, কারণ এই ফিল্ডে অনেক স্কোপ আছে, অনেক হিউম্যান ডিজিজ সারানোর প্রশ্ন করা যায়। তো সেই জন্য আমি বলতে চাইছি সায়েন্স is a very enjoyable activity. আমি একটা ছোট্ট তোমার এক্সাম্পল দিয়ে দেখালাম যে কিভাবে সায়েন্টিস্টরা অ্যাড্রেস করেছে যে সেল ডেথ কেন হয়, সেল ডেথ না হলে কি হয়, সেল ডেথ বেশি হলে কি হয়, এইসব প্রশ্ন ওরা দেখেছে। আচ্ছা, সায়েন্স ইজ a very very enjoyable activity. কিন্তু কি করে তুমি করো? প্রথমে you have made an observation. Suppose one morning you made some observation in your garden or somewhere, and then an idea is generated by you. সেই আইডিয়াটা জেনারেট করার পরে ইউ লুক ফর প্রায়র নলেজ, মানে আচ্ছা লিটারেচারে কি আছে, কে কি জানে এই বিষয়ের ব্যাপারটা। সো ইউ লুক অ্যাট ইট, তারপরে তুমি একটা হাইপোথিসিস ডেভেলপ করেছো, আমি মনে করছি এইটা, কিন্তু আমি কি করে এটা প্রমাণ করবো? তাহলে আমার এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। সো ইউ ডু এক্সপেরিমেন্টস, এন্ড এই এক্সপেরিমেন্ট করার পর সেগুলোকে রিপিট করতে হবে। মানে এক্সপেরিমেন্ট একটা করলে কিন্তু হয় না, অনেক এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে হয়, কোনদিন এক্সপেরিমেন্ট কাজ করে, কোনদিন এক্সপেরিমেন্ট কাজ করে না। সেই জন্য অনেকবার করে দেখতে হবে এক্সপেরিমেন্ট কাজ করছে কিনা। এইবার এক্সপেরিমেন্ট যখন কাজ করলো তখন তুমি কি করলে? কনফার্ম করলে, এবং সেইটা হলো তোমার ডিসকাভারি। তো সায়েন্স, এই যে সায়েন্টিস্ট তিনি ভাবছেন
আইডিয়া এসছে, ভাবছেন, আইডিয়া এসছে, বই কনসাল্ট করছেন, তারপরে এক্সপেরিমেন্ট করছেন, এবং ডিসকাভারি যখন হয় সেটা ভীষণ আনন্দের। তো সায়েন্স, দ্যাট ইজ ওয়াই ইজ আ ভেরি এনজয়েবল অ্যাক্টিভিটি। তুমি কি করতে পারো, হোয়াট ইউ ক্যান ডু এজ এ সায়েন্টিস্ট? তুমি একটা ন্যাশনাল ল্যাবরেটরিতে সায়েন্টিস্ট হতে পারো, তুমি একটা ইউনিভার্সিটিতে সায়েন্টিস্ট হতে পারো, ইন্ডাস্ট্রিতে একটা ল্যাবরেটরিতে সায়েন্টিস্ট হতে পারো, অন্যান্য অনেক অর্গানাইজেশনে তুমি সায়েন্টিস্ট হতে পারো। So there are ample scopes that if you are a scientist, you can become so many things. Also, you can be a science teacher and a researcher in the university, in the college, in school. So there are ample opportunities, and in addition, যখন আমরা ছোট ছিলাম আমাদের এই অপরচুনিটি ছিল না। এই তুমি তাছাড়া তুমি যদি ভালো আঁকতে পারো, তুমি কি হতে পারো? তুমি সায়েন্স ইলাস্ট্রেটর হতে পারো, ছবি আঁকতে পারো, সায়েন্টিফিক ইলাস্ট্রেশন হতে পারো। ইউ ক্যান বি এ সায়েন্স রাইটার, সায়েন্স কমিউনিকেটর। এত ভালো ভালো বই, এত ভালো ভালো আর্টিকেল বেরোয় সায়েন্সে, দিজ আর ডান বাই সায়েন্স কমিউনিকেটর্স। তুমি যদি সায়েন্স পড়ে থাকো, ইউ ক্যান বি এ সায়েন্স কমিউনিকেটর, and or you can train yourself in scientific photography and become a scientific photographer. So that is also an option for you to become something. So I think this is going to overlap a little bit with Professor Tandon, but I wanted to name some scientists from Calcutta who have worked in Calcutta. And science is global; it's not confined to Calcutta or anywhere; it's global. But these people have actually worked in this city, and as Calcuttans, you should be proud of them that C.V. Raman Institute কাজ করেছিলেন, this very institute. পরবর্তীকালে উনি নোবেল প্রাইজ পান। মেঘনাথ সাহা কলকাতায় কাজ করেছিলেন, এস সত্যেন্দ্রনাথ বোস, জগদীশ চন্দ্র বোস, কিছু নাম তোমরা আগে লেকচারে শুনেছ, তারা সব এখানে কাজ করেছিলেন। এবং ইন অ্যাডিশন টু দ্যাট প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এস এন দে, এদের নাম শুনেছ। C.V. Raman is best known for his work in light scattering, যেখানে উনি দেখিয়েছিলেন যে when light traverses a transparent material, the deflected light changes its wavelength and frequency. এটাকে রামান ইফেক্ট বলা হতো, এবং উনি নোবেল প্রাইজ পান এই অবজারভেশনের জন্য। প্রফেসর মেঘনাথ সাহা, উনিও একজন দিকপাল সায়েন্টিস্ট ছিলেন। উনি was an astrophysicist and devised the theory of thermal ionization. Shaha's equation is one of the 10 most outstanding discovery achievements in astronomy and astrophysics. He's a tremendously respected scientist all over the world. Professor Shatyen Bose, he is best known for his work on quantum mechanics. Einstein's সঙ্গে মিলে Bose-Einstein statistics করেছিলেন, Bose-Einstein condensate ওনাদের নামে জানা যায়। তিনিও কলকাতায় বসেই কাজ করেছেন। তারপরে প্রফেসর জগদীশ চন্দ্র বোস, উনি একজন ইন্টারন্যাশনালি রেকগনাইজড সায়েন্টিস্ট, যিনি অপটিক্যাল প্রপার্টিজ অফ রেডিও ওয়েভস এন্ড ওয়্যারলেস ট্রান্সমিশন করেছিলেন। আজকে যে আমরা 5G ফোন ইউজ করি, তার কোথাও ডক্টর জগদীশ বোসের কন্ট্রিবিউশন আছে। এবং উনি এও দেখিয়েছিলেন যে গাছ, যেমন তোমরা কি জানো, মাইমোসা পুটিকা বলে একটা গাছ আছে, সেটা বলি লজ্জাবতী লতা। সেই লজ্জাবতী লতা হাত দিলে ওরা পুঁকে যায়। সেটা কিরকম ভাবে হয়, কেন হয়, উনি সেটা বার করেছিলেন। তো জগদীশ বসুর সেইটা কন্ট্রিবিউশন। আরো দুজন সায়েন্টিস্টের আমি নাম করবো। উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী কালা জ্বরের ওষুধ সিনথেসাইজ করেছিলেন, এবং সেটা বহু লোককে বাঁচিয়েছিল। তখন রুরাল ইন্ডিয়া, গ্রামে তখন মরা পেয়ে যেত, তখন উনি সেই ওষুধ দিয়ে অনেক লোককে বাঁচিয়েছিলেন। উনিও একজন এক্সাম্পল। এবং আরেকজন লোকের সচরাচর জানে না, ডক্টর এন দাশগুপ্ত। উনি এশিয়ার প্রথম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ বানিয়েছিলেন, একটা হরিজন্টাল ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তোমরা জানো। সেই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ প্রথম কিন্তু উনি বানিয়েছিলেন, এবং তাতে ওই উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী যে বাঘটাকে মারার জন্য ওষুধ বার করেছিলেন, তার একটা ছবিও আছে, উনি করেছিলেন। এই মাইক্রোস্কোপ এখন সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে রাখা আছে, সেটি মানে একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। তো তখনকার দিকে মানিকতলার মিস্ত্রিদের দিয়ে উনি সব টার্ন করে করে বানিয়েছিলেন। মানে এটা কি বলবো, such an invention he made at that time. তো এটা সবার আমাদের we should be proud as Calcuttans that these people worked here in Calcutta. And আমার মনে হয় তোমার
আমাদের সেটা নিয়ে গর্ব করতে পারো। এবং তোমরা আজ কলকাতায় আছো, তোমরা যখন বড় হবে তোমরা কলকাতায় থাকবে তার কোনো মানে নেই। তোমরা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে, তোমরা বৈজ্ঞানিক হও, সাহিত্যিক হও, যাই হও, তখন তোমরা ইউ ক্যান বি প্রাউড অফ ইয়ার সিটি অলসো। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস আমি বলতে চেয়েছিলাম যে সায়েন্স হচ্ছে টিম ওয়ার্ক। তোমরা আজকে যে পড়ছো, একসঙ্গে পড়ছো, সবাই একটা টিমে পড়ছো, কিন্তু সায়েন্স যখন আমরা করি তখন আমরা একলা কিন্তু করতে পারি না। এককালে ছিল যখন, অনেক আগে, যখন সত্যেন বোস বা এরা বসে বসে নিজেরা কাজ করতেন, কিন্তু তারাও কারো না কারোর সঙ্গে কোলাবোরেশন করতেন। সায়েন্স ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টিম অ্যাক্টিভিটি। তো টিম অ্যাক্টিভিটি বেস্ট এক্সাম্পল আমি তোমাদের দেখাতে পারি যে এটা প্যারালাল, যে টিম সায়েন্সের যে টিম অ্যাক্টিভিটিটা হয় সেটা আমি অনেক শিখেছি গেমস থেকে। গেমসে যেমন মানে ইউ ওয়ার্ক এজ এ টিম, যেমন বলতে চাইছি এটা ইটস লাইক সামওয়াট লাইক ক্রিকেট, লাইক ডিসিপ্লিন, এন্ডিউরেন্স, স্ট্রেংথ, স্কিলস, পেশেন্স এন্ড ফোকাস। তো তুমি যদি দেখো একটা ক্রিকেটের ছবি, দেখো সবাই কিন্তু একটা টিমে আছে। এরা যে দাঁড়িয়েছে, they are focusing on one ball which might, the bowler is bowling and the ball might come into anybody's hand. So they are very focused and they are showing their discipline and their patience. So this is a teamwork, but there are moments of success and moments of disappointment in science. মানে তুমি একদিন তোমার এক্সপেরিমেন্ট কাজ করতে পারে, আরেকদিন নাও কাজ করতে পারে। তো এই যে ক্যাচটা ধরেছে, it is a success, কিন্তু এই যে ক্যাচটাও ফেলেছে, it's not a success. So সায়েন্সে কিন্তু এটা সারাক্ষণ হতে পারে। So I can draw this parallel. And যখন যেটা ডিসকভারি হয় তখন it's a joy. বুঝতে পারছো? সায়েন্স যদি তোমরা করতে চাও, দেখে তার মধ্যে সব কম্পোনেন্টই আছে, সেটা ভীষণ এসেনশিয়াল। তবে I'm missing one slide, and what I wanted to say is ultimately a responsibility. তোমাদের যে রেসপন্সিবিলিটি আছে as a scientist, আমি তো বলছি তোমরা সবাই সায়েন্টিস্ট হবে এমন কোনো মানে নেই। তোমরা কেউ লেখক হতে পারো, কেউ হয়তো ভালো কবিতা লিখো, কেউ হয়তো ভালো লিখতে পারো, তো তোমরা সবাই সায়েন্টিস্ট হবে কোনো মানে নেই। কিন্তু আমি বলতে চাইছি সায়েন্সে যদি আসো তাহলে অনেক কিছু পাবে, কারণ এটা it's like a game that gives you a lot in life, and at the same time you work and you get a profession where you have fun. It's a lot of fun to be a scientist because you get paid for something you have fun with. So এইটুকু বলে আমি শেষ করছি। Thank you so much, ma'am. তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমি করতে পারি। প্রশান্ত কোথায় গেল? হ্যালো, এবার আমাদের ল্যাব ভিজিট আর প্রশ্ন আচ্ছা The worm you showed in there, the one that was used to observe the cells, the death and the growth, what is the worm called? It's called C. elegans. Its scientific name is C. elegans. It's a nematode worm, and it's a laboratory model system that we use for. It's totally transparent. You can follow the fate of each cell. No, but my question is, that worm, if it's transparent, we are made up of cells. If it's transparent, how come its cells are visible? Oh, it's the coating of the body is totally transparent. Okay, only the coating. So you can the outer membrane is totally transparent. So you can see it. It's very interesting. You don't have to have a very powerful microscope. You can use it under a dissecting microscope where you can see that worm. So they do a lot of experiments, like they starve them and see what changes are happening, and you can actually look. But generally, people label the cells with, say, a marker, some marker for, say, cell death, and they either stop that gene or they overexpress that gene and see what changes it is happening, whether the cell is really dying or other cells are being affected. So it's a very interesting one. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. But yes. I want to ask that you have said that microscope was invented by Anton van Leeuwenhoek,
But previously also Robert Hooke, who made a self-made microscope and visited the cells of a plant. So, ma'am, aren't these are controversial that who invented the microscope and telescope? Yeah, I'll explain to you. Very, very pertinent and good question. I'm glad that you know this. So Robert Hooke actually also made a microscope which was almost parallel to the time when Leeuwenhoek made the microscope. So Robert Hooke, the microscope that he had, he looked at the sections of corks. Sections of corks, and he called them cells. And that's from where the cell word has come. So what I said basically is Leeuwenhoek was the first man to see moving objects. Robert Hooke did make the microscope, but he did not see the moving objects. He just looked at the corks, and Robert Hooke was a polymath, so he was doing many things. So if he was at it, he would have seen those cells also, but he was a town planner, he was this and that, he did a lot of things. He made the microscope, he looked at the corks, he looked at those holes. You can check on the internet also, the photographs are there, like how those are the cells. So they were almost in similar times. But Leeuwenhoek made a microscope which was like this. It was just a small microscope in which he took the pond water and saw the moving creatures. So he was the first man to see that. Robert Hooke also made a microscope. He became the president of the Royal Society of London. Robert Hooke was a proper scientist, and Leeuwenhoek was not a scientist. So that was the difference. But eventually, Robert Hooke at those times gave the fellowship to Leeuwenhoek to pursue his studies. So, ma'am, thank you. That's why you were here. Yes, another question? Ma'am, I want to ask that you have said cells die at each form of death. Why? Cells die at each form of death. Late form. Yeah. Yes. So you see what happens with our cells. Suppose there is a cell who dies not by a neat form of death, but by an untidy form of death by which it bursts. When it bursts, it releases many things from inside which causes inflammation in that part, and that may kill the other cells. So body prefers that cells die in a neat form. And especially also during your when you are growing, when the child is being formed, especially in there we don't want the inflammation. Even when we cut our fingers, the cells are growing, we don't want the inflammation. So that is why a neat form of death is preferred. And what I mean by neat form of death is the cell divides into small blocks which are all covered by membranes. And inside that membrane, the DNA, the RNA, the proteins are there in each membrane. They are eaten up by phagocytic cells of the body and they are disposed of. So there is no inflammation. Thank so you. that is that. Yes. Yes, ma'am. I want to ask about the contribution of Sidney Brenner. Yes. Please repeat. Sidney Brenner was a very brilliant scientist, and he did many things. Amongst them, his most prominent work was with this worm C. elegans. Not only to look at cell death, but also to look at organ development. So there are many forms of things that we have, but anyone can be a model that you can think of. Suppose you look at many organisms, you think that this is going to be a good model for this. Like mouse is a good model for laboratory research. So he first discovered that this worm can be used for these studies because he saw it was transparent, its cells can be labeled easily, it can be grown in a medium in which food can be given. You can starve it by not giving a food and see the changes. You can add different drugs and see what happens in that medium to that worm. So Sidney Brenner's fundamental contribution was discovering that worm and taking it as a model. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, another one. My question is, how does a cell know when it has to die?
See, there are multiple views on this. One is we know that we have a genetically programmed cell death. Because during development, when the cell is dividing from a zygote to a morula and then dying, those are genetically programmed and they are destined to die at a different definite time point and during the lifetime. But see, we sometimes have excess death because we are exposed to radiation, we are exposed to pesticides, pollutants, so cells may die. That is called induced cell death. And that induced cell death can take two pathways mainly to die. So that is how a cell knows. I mean, it senses in a way that either genetically programmed or induced. Thank you. Thank you. Any more? No. Thank you. Thank you very much. Oh, still there is one. Ma'am, I have a question that in a normal human, the cell death occurs from time to time. But in some cases of cancer or tumor, the cell death may not occur in a normal human. But why does that happen that the cell death does not occur? Yes. So, as I said, I showed you that there are a set of genes for that worm, that they have discovered. Similarly, in humans, there is a set of genes that actually regulates the whole cell death pathway. Suppose there is one gene which is called BCL2 gene. BCL2 gene actually ensures that cell survives. Now, there are some members of BCL2 which actually ensures that cells will die. Now, there is some mutation. So, if that mutation, due to that mutation, the cell will not die at a time when it was supposed to die. Cell will keep on proliferating and that will form tumors. So that is due to these anomalies that happen. Thank you. Ma'am, I have a doubt that if the cell birth and the cell death is totally balanced or not. Repeat your question. Cell birth and cell death is totally balanced or not. It's very difficult to say. It's a good question whether it's totally balancing X amount of death or X amount of birth. Generally, it is thought that since, say, a billion cells die per day in our body, a billion cells are also born. But it is very difficult to measure. We do not know exactly that whether the balance is this way or that way. We assume that since nothing is happening and cells are dying and cells are being born, it is actually exactly half and half. That's what we do. Cells die and form in our body. Yeah. When the cell bursts in human body, is it after forming malignant tumor, or is it after forming malignant tumor or non-malignant tumor? When and how cell bursts in human body, and what are the results of cell burst? Well, the cells will burst if suppose the cell gets a stimulus that it's not suited for the cell. What happens? The cell starts to swell. So the water accumulates within the cell from drawing from neighboring cells or neighboring, that niche that the cell is, and then it will eventually burst due to that pressure, that osmotic changes that occur. So when it bursts due to that only, and if it bursts, then it releases all the contents. So it is very important that the cell does not burst like that and spoil the others. And that is why the cellular nature evolved cell death, which is a very neat form of death. So the bursting of cells is due to cell swelling, primarily, and that's called necrosis. So if you see necrosis versus apoptosis, there's a very distinct difference between the morphology of the two. Okay, thank you very much. Thank you for the question. আচ্ছা, সবাইকে আমি বলছি তোমরা এই ব্যাচটা পড়ে নাও। হ্যাঁ, অনেকে বলনি, একটু পড়ে নাও। হ্যাঁ,
আচ্ছা, এবার আমাদের ওই ল্যাব ভিজিট সেশন শুরু হবে, তারপরে ফটো সেশন। তো আমাদের পিএসসি স্কলার সোহম তোমাদের বলে দিচ্ছে কোডিং স্কুল কোথায় যাবে। সোহম। And welcome to IACS. তো আমি তিনটে স্কুল অ্যাকচুয়ালি গ্রুপ করা হয়েছে। তো একটা স্কুল যাবে এক্সআরডি ল্যাবের ওখানে, একটা যাবে হচ্ছে আর্কাইভ অ্যান্ড স্পেকট্রোমিটার, আর একটা হচ্ছে এনএমআর ল্যাব। তো আমি তিনটে স্কুল ক্রোনোলজিক্যালি ডাকবো। যেই তিনটে স্কুল বেরোবে ওখানে পিএইচডি স্কলাররা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ওরা তোমাদেরকে এক এক করে নিয়ে চলে যাবে। আর হচ্ছে বাকি যে স্কুলগুলো থাকবে তারা এখানেই বসে থাকবে। ওরা ল্যাব ভিজিট, তিনটে গ্রুপ সবকটা ল্যাব ভিজিট করার পর লাঞ্চে চলে যাবে। দিয়ে তোমাদের এখান থেকে আবার নিয়ে যাওয়া হবে, ওরা আবার করবে, দিয়ে ডাইরেক্ট লাঞ্চে চলে যাবে। লাঞ্চ করে ডাইরেক্টলি 2টোর সময় আবার আমরা এখানে মিট করবো। তো এটাই হচ্ছে প্রোগ্রাম। তো ফার্স্ট স্কুল যেটা হচ্ছে যাদবপুর হাই স্কুল। বাইরে যাও, বাইরে হ্যাঁ, লাঞ্চটা ওই যে দাদাগুলো থাকবে পিএইচডি স্কলার, they will take you to the lunch area in wait. Okay. সেকেন্ড স্কুল হচ্ছে সন্তোষপুর ঋষি অরবিন্দ বালিকা বিদ্যাপীঠ।